Do you want to achieve excellence in your life? Let me help you. In this video, we will talk about flip technique. Flip technique में क्या होगा कि आपको जो आपकी पैसिव लर्निंग की जो चीजें हैं, पैसिव जो आप वो चीजें कर रहे हैं, उसको आपको हेल्प मिलेगी कि आप उससे एक एक्टिव लर्निंग में, स्ट्रैटेजीज में आप चेंज कर सको. इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, take one area that you want to work in your life. Second thing is, what you should do is ask yourself a question, what I had to do to take this area to zero, कि lowest पे जाने के लिए मुझे इस एरिया में क्या करना होगा. What you should do is circle the things that you are currently doing, कि आज आप वो चीजें, उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आज आप कर रहे हैं. Next thing is flip it. Let's take an example. If you want to grow in your life, if you want to earn money in your life, then you should not be pessimistic. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? I have taken an area, that's my career. Then I ask myself a question, what I had to do to be zero in that area. Be pessimistic. कि अगर मुझे उसमें जीरो पे जाना है तो मुझे पैसिमिस्टिक होना पड़ेगा. अगर मैं मेरी ग्रोथ के लिए कहीं पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे डाउट होना चाहिए कि क्या पता मुझे उतना रिटर्न मिले या ना मिले. राइट, दैट इज अ पैसिमिस्टिक वन हु इज होपलेस. नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट आई हैव सर्कल्ड दैट थिंग पैसिमिस्टिक, देन आई फ्लिप इट विद ऑप्टिमिज्म, विद होप, विद ग्रैटिट्यूड. राइट, then optimism is the one that if I am investing in my growth, then I have much possibility that I can gain something from this workshop, from this video. Right, so that's an example. Just flip that area that you are, flip that thing or flip that habit that you are currently doing or that you are in between to become the better version. What is the first thing that you want to do to excel in your life? Just flip it and be a next version of yourself.